Good morning student, welcome back to another video. Here is the chapter 2 of economics, sector of the Indian economy. Okay, sector of the economic activities. First of all, you will understand in our nations there are lots of in world there are lots of economic activity have been taken, but some of these activity producing goods, some other are producing services. Okay, these activity are happening around us every minute, even as we speak. Okay, how do we understand these activity? One way is doing this group them, it means classify them using some important criterion. Okay, these groups are called sectors. Okay, as you see in that figure, there are lots of economic activity have been taken. Some are producing goods, some are giving services. Okay, so sector of economic activities, we will discuss mainly the sector of Indian economy. Okay, so in our nations there are three sectors of economy: primary sector, secondary sector, and tertiary sector of economy. So we will understand one by one what is primary sector, which kind of economic activity have lies under primary sector, which kind of economic activity or service have lies under secondary sector of economy, which kind of uh, services or producing goods are lies in the tertiary sector of economy. Okay, we will understand deeply about that. Okay, now there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example, cultivation of land. It takes place within crop season for the growth of cotton plant. We depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. Okay, the product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animal and availability of fodder, etc. The product here, milk, also is a natural product. Similarly, minerals are and ore are also natural product. When we produce a good by exploiting natural resources, remember, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. This is a very important line. You will learn, you will understand, you will remind it. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. Why primary? Because it forms the base of all other product that we subsequently make. Why is this primary sector? This is because it forms the base of all other product that we subsequently make. Since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector and primary sector. Okay, so if I raise your questions, what kind of economic activities are comes under primary sector, then your answer is agriculture, dairy, fishing, forestry. Okay, these kind of activity, these kind of economic activities are lies under primary sector. This sector is also called agriculture and related sector. Okay, agriculture and related sectors. I hope you understand what is primary sector. Okay, if you have any doubt, please message me. Here is the some shortcuts you will learn to understand in the figure: primary sector, secondary sector and tertiary sector. What are comes under primary sector, what are comes under secondary sector, जिसको हम industrial sector भी कहते हैं, and what are comes in tertiary sectors. Okay, जो service sectors हैं, just like transportations, vehicle providing, lots of communication services, they are called service sector. Primary sector are also called agriculture sector, secondary sector also called industrial sector, and tertiary sector also called service sector. Remember that. Okay, now we are moving to the secondary sector. What is secondary sector? The secondary sector covers activity in which natural products are changed into other form. Remember, what is secondary sector? The secondary sector covers activity in which natural products are changed into other form through way of manufacturing that we associate with industrial activity. That's why we are also called secondary sector is a industrial sector, because in this sector natural products are changed into other form through the way of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. Okay,
The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing it essentials. This could be in a factory, a workshop, or at home. For example, of secondary sector is using cotton fiber from plant, कि हम प्लांट से कॉटन लेते हैं, फिर उससे हम कॉटन फाइबर्स बनाते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज क्या है हमारे पास? कॉटन। हम इसको क्या करें, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इससे कॉटन फाइबर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ही यही है कि व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? It the sector in which natural products are changed into other form through the way of manufacturing that we associate with industrial activity. Okay, so आप यहाँ पे clearly समझ सकते हैं कि using cotton fiber from the plant. Okay, we spin yarn and weave cloth using sugarcane as a raw material. We make sugar or gur. We convert earth into bricks and use brick to make houses and building. There are lots of example of secondary sector. Okay, since this sector gradually become associated with the different kind of industry that comes up, it is also called the industrial sector. जैसे यहाँ पे आपने examples देखा spinning yarn, कि हम कॉटन लेते हैं, फिर उससे यान करते हैं, फिर उससे कपड़े बनाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज से हम किस तरह से उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके हम उसको एक फाइनल कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। जैसे एक रॉ मटेरियल हमारे पास शुगर केन है, उससे हम शुगर बनाते हैं या गुड़ बनाते हैं, जिसको हम बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल क्ले है, अर्थ है, सॉइल है, उससे हम क्या करते हैं, मतलब ईंट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, एक मतलब प्रोसेस के थ्रू, जिसके ठीक है, एक मतलब किल में उसको बर्न करते हैं, फिर वो एक उससे फिर हम घर बनाते हैं। ये सब प्रोसेस है कि नेचुरल रिसोर्सेज से हम किस तरह उसको एक किसी न किसी इकोनॉमिक किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस से या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से हम उसको एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में जोड़ते हैं। ठीक है, सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट केम्स अप, ये अलग अलग इंडस्ट्री, ये कॉटन, ये यार्न की इंडस्ट्री है, ये कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है, ये शुगर इंडस्ट्री है, ये अलग अलग है, या फिर ये ब्रिक्स बनाती है। ये नेचुरल रिसोर्सेज को हम कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ करके, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके हम उसको एक अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये जो प्रोसेस है दैट आर कम्स, और इससे जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है या जो इकोनॉमी जनरेट होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो इकोनॉमी है ये सेकेंडरी सेक्टर का इकोनॉमी है। ओके, दैट वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल सेक्टर। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर। सो in here we will discuss about tertiary sector. After primary and secondary there are third category of activity that falls under tertiary sector. What is tertiary sector? It is in different form of above two. ये पहले दोनों से अलग है, प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग है। क्या क्या है ये? These are activity that help in the development of the primary and secondary sector. ये क्या करते हैं? ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को हेल्प करते हैं। क्या है, कैसे हेल्प करते हैं, ये हम आगे देखते हैं। These activity by themselves do not produce a good, but they are an aid or support. ये वो सेक्टर्स है जो कोई गुड्स नहीं बनाती है, पर उसको बनाने में किसी न किसी तरह का मदद, किसी न किसी तरह की सपोर्ट देते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जो भी गुड्स प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर्स में बन रहे होते हैं, वी sector would need to transport it by truck or train and then sold into wholesale and retail shop. At time it may be necessary to store these and go down. We also may need to talk to others over telephone, send letter to communications, or borrow money from banking, and help production of trade, transport, storage, communication, banking, trade are the some example of tertiary sector. ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, इसकी एक बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ है दुनिया भर में। ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। कोई भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक चीज़ की प्रोडक्शंस करनी हो तो उसके लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन लगता है कि चीज़ों को कहीं से रॉ मटेरियल हम लेते हैं, उसको फिर हम मैन्युफैक्चर्स करते हैं। फिर मैन्युफैक्चर करने का हमारा मकसद सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं, बल्कि उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। उसके मार्केट तक पहुंचाएंगे, उसको सेल करेंगे, फिर मार्केट से हमें इकॉनमी लेनी भी है, तो लेने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रोसेस चाहिए। जैसे हम बैंकिंग के थ्रू अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये जो आपको बैंकिंग्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट है, दे ऑल आर कम इन टू टर्सरी सेक्टर। सिंस दिस एक्टिविटी जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, ये गुड्स बनाने के बजाय सर्विस प्रोवाइड करती है।
ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसीलिए क्योंकि इसका काम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को, दैट्स वाई वी आर कॉल इट इज अ सर्विस सेक्टर। Tertiary sector also called service sector. Service sector also includes some essential service that may not directly help in the production of good. For example, we require teacher, doctor. ये डायरेक्टली कोई चीज़ बनाते नहीं बल्कि हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल लोग काम करते हैं, लोग बीमार होंगे तो उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लोग को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई बिल्डिंग्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, उसके लिए उन्हें इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें कि ये कहीं ना कहीं कोई गुड्स नहीं बनाते बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें एक सर्विस देते हैं। Just like teachers, doctors, they all are providing some personal services such as washerman, barber, cobbler, lawyer. They all are comes into tertiary sector. Okay, and people do administrate and accounting work. In recent time, certain new services based on information technology, such as internet cafe, ATM booth, call center, software company, etc., have become an important. Okay, so here is the basic and some deep explanation of primary sector, secondary sector and tertiary sector. Remember that primary sector is also called agriculture sector. अब जब आपको ये याद होगा कि प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल एंड टर्सरी को सर्विस सेक्टर, तो आप इसको रिलेट कर सकेंगे कि हाउ, ये मतलब कैसे प्राइमरी सेक्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड what is primary, what is secondary and what is tertiary sector. Okay, if you have any doubt, please message me in the comment box or in the group. In next video we will discuss about some economic activities, example of some economic activities. उसके बाद फिर हम compare करेंगे, comparing the three sectors, different topics हैं. Okay, I hope you enjoyed it. Have a nice day. Goodbye.